Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all will be doing well by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to start a new topic, Unit 1.3, the divisibility test, and the assignment that we are going to cover is assignment number 20. So let's begin. Objectives of the lesson. Inshallah, at the end of this lesson, you all will be able to determine the divisibility rules for 2, 3, 5 and 10. Use the rules for divisibility to determine if numbers are divisible by 2, 3, 5 and 10. Before starting the lesson, let us revise odd and even numbers. I know this is not a new topic. You all are familiar with odd and even numbers. Now let's see whether you remember them or not. Look at the numbers on the screen. Now tell me one by one which number is odd or which one is even. Which one will go to the odds column and which one will be fitted in the even column. What about 9? Is 9 an even number or an odd number? Very good. It's an odd number. 3. Yes, odd number. 0. Even number. 44. Even number because at the unit place we have 4. So it will be considered an even number. What about 25? 25 will go to which column? Even or odd? 25 को छोड़ें. 5 का बताइए. 5 even number है या odd number है? Odd है. So 25 is also an odd number because the digit at the unit place is an odd number. So it will go to the odds number column. 6. Even. 133. Again look at the digit at the units place. The last digit is 3. So is 3 odd or even? Yes, it is odd. 133 also goes to the odds column. 20. Yes, it's an even number. 912. An even number. Odd number कौन से हैं? रिवाइज कीजिए मेरे साथ. 1, 3, 5, 7, 9. ये 5 नंबर ऑड नंबर हैं. चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर उसके एंड पे यानी यूनिट्स के प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या 9 है तो वो पूरा नंबर ऑड नंबर कहलाएगा. इसी तरीके से 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर इवन नंबर्स कहलाते हैं. जिस नंबर के एंड पे यानी यूनिट्स प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो पूरा नंबर इवन नंबर कहलाएगा. रिमेंबर, ये सब आप कर चुके हैं पिछली क्लासेस में. फॉर द मेन लेसन यू ऑल्सो शुड नो द मल्टीपल्स. हो सकता है आप में से बहुत को मालूम हो कि मल्टीपल्स कैसे कहते हैं और हो सकता है ना मालूम हो. मल्टीपल्स इज नथिंग न्यू. इवन दिस टर्म मे बी न्यू फॉर यू. पहली बार शायद आप सुन रहे हों या आपको इतना रिकग्नाइज ना करते हो, लेकिन मल्टीपल्स आप जानते हैं कि क्या होते हैं. डू यू नो व्हाट मल्टीपल्स आर? जल्दी जल्दी आंसर्स बताइए. 3 multiplied by 5 gives us 15. 4 into 2 8. 7 sevens are 49. 13 twos are 26. Now look at the numbers on the right hand side. The products. जब हम दो नंबर्स को, फिलहाल मैं इनको नंबर्स कह रही हूँ, वैसे इनको फैक्टर्स कहते हैं.
जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आती है, जो आंसर आता है हमारे पास, वो मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीपल। ठीक है, तो अब हम इसमें कह सकते हैं, देखें अब इस मैथमेटिकल सेंटेंस में 3 नंबर्स इन्वॉल्व हैं, 3, 5 और 15। 15 is said to be a multiple. 8 is a multiple of 4 and 2. 49 is a multiple of 7 and 7. 26 is a multiple of 13 and 2. So by definition, the product obtained when multiplying a number by a whole number is called a multiple. ठीक है, अब ये हमारे पास 3 का टेबल है। बताइए कौन से नंबर्स इनमें से हम मल्टीपल जिन्हें कह सकते हैं? जितने भी नंबर ये साइन ऑफ इक्वालिटी के बाद लिखे हुए हैं, ये सब आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। अब आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि मैं 3 के मल्टीपल्स के ऊपर इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ। ठीक है ना, तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, यू कैन इजीली से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 एंड सो ऑन। ये सब मल्टीपल्स हैं 3 के। कोई भी नंबर जब 3 से मल्टीप्लाई होके जो आंसर देगा, जो प्रोडक्ट देगा, वो 3 का मल्टीपल कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। See, you have a big number on the screen. Can you read it out? It is 265,167,980. मसला इस नंबर को पढ़ने का नहीं है। अगर आप कोई मुझसे पूछे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है मतलब कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, क्या कोई रिमाइंडर बचेगा? Could this number be completely divided by 2 without leaving any remainder? I can tell you the answer. See, I am not using the calculator. I am not performing the long division or the short division, but I know that this number is absolutely divisible by 2. ये नंबर 2 से completely divide हो सकता है और आखिर में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। How? It is absolutely divisible by 2. यही चीज़ हम आज के लेसन में सीखेंगे कि एक नंबर को सिर्फ देखकर बताना कि क्या ये नंबर 2 से, 3 से, 5 से या 10 से डिवाइड हो सकता है। नहीं डिवाइड हो सकता मतलब कि विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अब जैसे कि कौन नंबर है आपकी स्क्रीन पे? 5,629,143. If you ask me, Miss, is this number divisible by 2 or not? I will straight away say, no, this number is not divisible by 2. Let me tell you how am I telling you the answers in one shot. The divisibility test. जैसे हम जाते हैं ना हॉस्पिटल्स में ब्लड टेस्ट करवाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के और टेस्ट कराते हैं, तो हम नंबर्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट करना कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, सिर्फ नंबर्स को देखकर। The method to check if a number is completely divisible or not is called the divisibility test. Completely divisible मतलब कि कोई रिमाइंडर ना बचे। When we say that a number is divisible by another number, we mean that the number can be divided by another number without leaving a remainder. अब आप उसके लिए लॉन्ग डिवीजन भी करते आए हैं, शॉर्ट डिवीजन भी करते हैं, बट दिस टाइम यू जस्ट हैव टू टेल बाय लुकिंग एट द नंबर. फॉर एग्जाम्पल 12 is divisible by 4 because when you divide 12 by 4 you have the answer 3. 4 के टेबल में 12 आता है 3 के प्लेस पे। लेकिन इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इस 12 is divisible by 5, आपको पता है कि 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 2s are 10 होते हैं और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि जब हम टेस्ट करें तो हम कहेंगे कि 12 is not divisible by 5. ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटे नंबर से आप देख रहे हैं 12 is a smaller number, but when we have to deal with bigger number, how can we test their divisibility? Let's find out.
Let's determine the divisibility rule of 2, 3, 5 and 10. सबसे पहले समझें कि divisibility rule होता क्या है. A divisibility rule is a shorthand way of determining whether a given integer is divisible by a fixed divisor without performing the division, usually by examining its digits. सिर्फ digits को देखकर ये बताना कि ये number divisible है या नहीं. ठीक है ना? इसे कहते हैं हम divisibility rule. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 का. ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करते हैं. आप खुद इंशाल्लाह रूल बनाएंगे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है. अब कुछ नंबर्स हैं, इनको आपने ऑब्जर्व करना है. 456, 22,016, 45,448, 3,010. ये क्या लिखा है? 11,112. अब अगर आप इन सारे नंबर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें, इनमें एक चीज कॉमन है. बताएं क्या? इन सब के अगर आप देखें लास्ट डिजिट को, द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज एन इवन नंबर. 6 इवन है, 8 इवन है, 0 इवन है और 2 भी इवन है. अब इन नंबर्स के बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये तमाम नंबर 2 से एब्सोल्युटली डिविजिबल हैं. मतलब कि अगर मैं इनको 2 से डिवाइड करूं, दे विल लीव नो रिमाइंडर. कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज एन इवन नंबर. तो बताइए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ? चाहे जितना बड़ा नंबर हो, आप उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 है, इसका मतलब है वो पूरा नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. You don't need to perform the long division or the short division or even use the calculator. आप एक ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेटर से. इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड करके देखें, कंप्लीटली डिवाइड होगा. डेसिमल्स में आपका आंसर नहीं आएगा. सो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, a number is divisible by 2 if the digit at the units place, the last digit, is an even number. इसीलिए स्टार्टिंग में आपको इवन और ऑड की एक्टिविटी करवाई थी. You must know what even numbers are. Now let's move on to the divisibility rule of 3. Alright kids, now let's find the divisibility rule of 3. You have this number on the screen. I haven't inserted the commas, but you can read this number. It is 59,034. See, it's a pretty large number. How can we tell whether this number is divided by 3 or not? Divided by 3 means completely divide. Now we don't need to perform the long division or short division. What do you think? How can we test the divisibility of 3 for this number? इसमें भी लास्ट डिजिट को देखेंगे. अगर ऑड होगा तो याद है जहन में? No. There's some working involved when we find the divisibility rule of 3. First you need to do, to check if the given number is divisible by 3 or not, you need to add the digits. So let's add them. 5 plus 9 plus 0 plus 3 plus 4 makes 21. सम क्या आया जब हमने सारे digits को ऐड किया? 21. We get the sum 21 which is a multiple of 3. 21 3 के टेबल में आता है ना? It means that this whole number 59,034 is divisible by 3. समझ आया मल्टीपल्स क्यों करवा दी थी स्टार्टिंग में? ये सारे मल्टीपल्स हैं 3 के. 3 1 जा 3, 6, 9, 12, 15, 18. ये देखें आपको यहाँ पे 21 दिख रहा होगा. 21 3 के टेबल में आता है. 21 is a multiple of 3. It means this whole number is absolutely divisible by 3. तो क्या रूल बना 3 का? Divisibility rule of 3 is a number is divisible by 3 if the sum of all digits is a multiple of 3.
यानी कि जितना भी बड़ा नंबर हो आप उसके तमाम डिजिट्स को ऐड करेंगे, जो सम आता है अगर वो 3 के टेबल में आता है, if it is a multiple of 3, then that number is absolutely divisible by 3. Got that? Now let's find the divisibility rule of 5. सोचें 5 का रूल क्या होगा? 5 की टेबल पे कभी गौर किया है? क्या आता है एंड में लास्ट डिजिट? 5 या 0, 5 या 0 है ना? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 15, 20, 25, 30. इसी से रिलेटेड है 5 का रूल भी, ठीक है? नाउ वी हैव टू नंबर्स, वन इज 3270, द अदर वन इज 495. Look at the digits at the end. We have a 0 in the upper number and a 5 at the bottom number. The digit at the units place is 0 and 5. So we can say that 3270 is divisible by 5. Why? Because 0 is there at the units place. And 495 is also divisible by 5 because we have 5 at the units place. ये दोनों नंबर completely divide हो सकते हैं 5 से. क्यों? क्योंकि एक नंबर के एंड पे 0 है और दूसरे नंबर के एंड पे 5 है. तो क्या रूल बना 5 का? A number is divisible by 5 if the digit at the units place, units place मतलब the last digit, is 0 और 5. जैसे आपके कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे देखेंगे एंड पे 0 है 5 है, आप फौरन से कह देंगे कि this number is divisible by 5. मतलब it will leave no remainder if you divide them. I hope you understood it. Okay, the last one, the divisibility rule of 10. जिस तरह से 10 खुद है ना, एंड पे 0, इसका रूल भी कुछ इसी टाइप का है. We have two numbers over here, 3490, 8210. Now let's check the divisibility of 10 with these two numbers. To check if the given number is divisible by 10 or not, look at the digit at the units place. जो आखिर में digit है उसके ऊपर गौर कीजिए. In 3490, it's 0 at the units place. In 8210, it's again 0 at the units place. So we can say that both the numbers are divisible by 10 because both have 0 at the units place. तो क्या रूल बना 10 का? A number is divisible by 10 if the digit at the units place, the last digit, is 0. Got that? चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. एक टेबल आएगा आपके पास, ये रहा. 4 नंबर्स हैं ABCD. अब हमें इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है. हमें रूल मालूम है 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी और 10 का भी. थोड़ा रिवाइज करें. 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? हम एंड के नंबर को चेक करेंगे, यूनिट के नंबर को. अगर वो इवन होगा तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2. 3 के लिए क्या करना होगा? सारे डिजिट्स को ऐड करके सम चेक करेंगे. अगर सम 3 का मल्टीपल होगा इसका मतलब है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. 5 के लिए आप एक ही ग्लैंस में बता सकते हैं by looking at the digit at units place. If it is 5 or 0, it means that number is divisible by 5. And for the divisibility test of 10, you will again look at the last digit. If it is 0, then that number is absolutely divisible by 10. If not, then it is not. Now let's start with the first one, 45,893. जल्दी से बताएं, is it divisible by 2? Looking at the last digit, last में हमारे पास क्या है? 3. 3 even number है या odd? Odd.
it means that it is not divisible by 2. तो आप क्या लिखेंगे? No. 3 is an odd number. ठीक है, सिर्फ देखने से ही आपको समझ आ रही है कि it is not divisible by 2. But for 3 you have to do some working. Quickly add all the digits. जल्दी से sum find out करें. 4 plus 5 plus 8 plus 9 plus 3. I can mentally add them. Let's see whether you can or not. Done with the addition? Did you find the sum? Is the sum a multiple of 3? 3 के टेबल में आता है जो आपका सम आया है. 4 plus 5, 9, 9 plus 8, 17, 17 plus 9, 26, 26 plus 3, 29. No. The sum of all the digits is not a multiple of 3. ठीक है, 5 के लिए इजी है. फिर से हम एंड वाले डिजिट को देखेंगे यूनिट प्लेस के. ना तो ये 5 है और ना ही 0. इसका मतलब है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5. 10 के लिए भी हम चेक करेंगे यूनिट प्लेस के डिजिट को. इट्स नॉट 0, so it is not divisible by 10. No. Now let's move on to B. सिर्फ 3 digit number है. Again look at the last digit, the digit at the units place. Is it an even number or an odd number? Yes, it is odd. It means it cannot be divided by 2. Cannot be divided by 2 का मतलब completely. It will leave some remainder. So we will say that this number is not divisible by 2. No. Now for 3, quickly add them. 2 plus 8, 10. 10 plus 5, 15. Is 15 a multiple of 3? 15 आता है 3 के टेबल में. Yes. It means that this number is divisible by 3. Quickly tell me whether it is divisible by 5 or not. Yes, it is, because the digit at the units place is 5. According to rule, it is divisible by 5. And for 10, it's a no, because we don't have a 0 at the units place. Done? Now move on to C. जल्दी से बताएं. Is it divisible by 2? Yes, because 0 is an even number. So we can say this number is divisible by 2. Now for 3, quickly add them. 2 plus 0 is 2. 2 plus 9, 11. 11 plus 1, 12. 12 plus 0 is 12. So this number is divisible by 3. Is it divisible by 5? Yes, because according to the rule, we have a 0. When we have a 0 at the units place, the number is divisible by 5 and 10. So yes for both. Now the last one. Again look at the units place, the last digit, 6. 6 is an even number. So this number is divisible by 2. Yes. 7 plus 4 plus 5 plus 1 plus 6 gives you 23. And 23 is not a multiple of 3. So this number is not divisible by 3. Is it divisible by 5? No, because the number at the units place or the last digit is 6. Is it divisible by 10? No, because for 10 the last digit must be 0, but in this case it is 6, so a no for 10 as well. I hope you would have understood all the divisibility rules